Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the number series. Let's start. Hello students, we are at the light board, and as I've just explained, today we are going to discuss our first and foremost question of logical reasoning, that is about number series. Now so many of you feel that this question is not included in our syllabus, and I have heard and faced so many queries of students regarding this number series. But if you go through your syllabus, you will get to know that it is a part and parcel of the question titled as symbol and letter series. If you go through the description of that question, letter and symbol series, the very first thing you have been told that these questions may carry a number series, a letter series, or a symbol series. So it is evident that it is a part and parcel of symbol and letter series. So it is not separately mentioned in your syllabus, but that is there, that is included in your syllabus. So be very clear about it. ये तो पहला एक disclaimer है. Secondly, this is the most convenient and most easy topic as far as logical reasoning is concerned, and that is why we are starting our lecture from this particular topic. Why it is easy? Why it is convenient? Because we generally play with the numbers in our real life. It is an everyday job for us to go through numbers and to go through simple mathematical operations, and it is nothing new. Although some students fear that we haven't been in touch with mathematics since our matric or O levels, or we have been out of touch being medical students, we haven't been doing a lot of mathematics during the previous 2-3 years. But let me clarify that number series does not involve any complex mathematical questions or functions. इसमें कोई ऐसी आपसे ऐसा जो है ना वो कोई आपको थ्योरम नहीं पूछे जा रहे होंगे, कोई ऐसी कोई कम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स नहीं दी जा रही होंगी कि आप इन चीज़ों को प्रूव करें. यू विल बी आस्क्ड द सिंपल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस. सो इन चीज़ों के बाद अब हम चलते हैं. ये थोड़ी सी एलैबोरेशन ज़रूरी थी आप सब बच्चों के लिए, बिकॉज जनरली पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि जी हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो हमें जो है वो मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है. तो इस हवाले से ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी सीरीज कैन बी फॉर्मुलेटेड, और आई शुड से कि कितनी तरह से, इन हाउ मेनी वेज सच क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड, किस तरह से जो है ये सीरीज जो है वो बनाई जा सकती हैं और किस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी a series of specific type of numbers. Now in metric and in O levels you have heard about different types of numbers: natural numbers, integers, whole number, and etc. You have heard about them. पहला क्वेश्चन ही आपका ये बनेगा कि ऐसी कोई सीरीज आपसे पूछी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट डाउन अ क्वेश्चन 1, 3, 5, 7, and then even we can add one more, 9, and I give you the option 11, 13, 15, and 17. That will be your option beta, that is Charlie, and that is delta. Now you know that it is a series of odd numbers. Odd numbers क्या होते हैं? That are not divisible by 2. तो इसमें से कोई भी जो है वो 2 से divisible नहीं है. So the next option, the next number should be 11. Because अगला हमारे पास जो odd number आ रहा है that is 11. But sometimes these series can confuse you. For example, if I gave you a question 1,
3, 5, 7, 11, 13. And then I ask you what number will come next, and they say 15, beta 17, Charlie 19, and delta is 21. There is a possibility that some of you will think that the next number should be 15, because again we are following the series of even number, but no, it is not the case. Here we are not dealing with the even numbers. We are actually dealing with the prime numbers. Prime numbers क्या होती हैं? That can only be divided by themselves, जो सिर्फ खुद पर ही divide होते हैं. 1, 3, 5, 7, and you can see we have skipped 9 because 9 can be divided by 3. तो हमने उसको क्या किया? Skip किया, and we have chosen the next prime number, and then we have chosen the next prime number. So 15 is not the prime number because 15 can be divided by 3 and as well as 5. So 15 तो prime number नहीं है. So our right option will be option beta, that is 17. Because here we are not following the series of odd numbers. We are following the series of prime numbers. So इसको देख लीजिएगा, ये important है कि बड़ा ही carefully आपने उसको choose करना है. एक और example करते हैं. -5, -4, -3, -2, and then -1. Now, there is a possibility if I give you the option like 0, beta 1, Charlie 2, and delta 3. Now there is a possibility that you can skip that 0. But here we are not talking about the whole numbers. We are talking about integers. So यहाँ पर क्या आएगा? -1 के बाद क्या आने? It must be 0 and our right option must be option alpha. So ये series जो है इनको एक बार just go through कर लीजिएगा. Basic series है. There is nothing complex about it, and you will get through this type of question very easily. Second important thing is about addition. Now series can be created using this basic function. For example, if I say 6, 18, 30, and they give you the option 24, beta 36, Charlie 42, and delta 48. You can clearly see that we are adding actually plus 12 to the previous number. 6 plus 12, 18. 12 plus 18 is 30. And now we add, if we add 12 to 30, it will become 42. So our right option will be option Charlie. So basic simple function है. As such उसमें कोई problem नहीं है. Then same is the case with subtraction. A series can be created using subtraction. For example, if I write down an example like 50, 44, 38, and I give you the option 34, beta 32, Charlie 28, and delta 24. You can easily evaluate the pattern that we are following actually -6. 50 में से 6 minus करेंगे तो that will be 44, and then if we subtract 6 from 44 it will
gave us 38. So if we subtract 6 from 38, it must give us the number 32. So our correct option will be option beta. So these are very simple things to do as I've just explained you. देखो बहुत मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है. यहाँ तक तो एसेट बिल्कुल ही आपको लग रहा होगा कि आसान है, बट थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी डेवलप होती है जब a pair of series can also be used to create a certain series. पेयर में भी आ जाते हैं. सिंगल सिंगल तो आपके लिए बहुत आसान है. अब पेयर में कैसे यूज करते हैं? दोनों चीजें हो सकती हैं कि दोनों दो सीरीज आपको दे देंगे और फिर आगे दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये भी हो सकता है कि दोनों सीरीज में एडिशन होता जाए और ये भी मुमकिन है कि दोनों सीरीज में सब्ट्रैक्शन होती जाए. मतलब मैं इसको लिख भी देता हूं. तीन ऑप्शंस हो सकती हैं. बोथ सीरीज में शो एडिशन और सब्ट्रैक्शन. नंबर वन पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है अगर दो सीरीज वो पूछेगा. अनदर ऑप्शन कैन बी one series may show subtraction and other one may show addition. ये भी हो सकता है. दो डिफरेंट सीरीज भी चल सकती हैं. एक सीरीज में हम क्या करें? मुसलसल चीजें ऐड करते चले जाएं और दूसरी सीरीज में हम क्या करें? ये चीजें सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं. एंड देन एक और पॉसिबिलिटी भी मुमकिन है कि वन सीरीज में शो addition or subtraction while the other may remain constant. ये भी ऑप्शन हो सकती है. अब ये जब तीन सिनेरियोज आएंगे तो फिर थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो आपके लिए थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएगी. और ये कैसे आ सकती हैं मैं आपको एग्जांपल से अभी दिखा दूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सिनेरियो वेयर आई टोल्ड यू दैट द बोथ सीरीज मे शो एडिशन और सब्ट्रैक्शन. दोनों सीरीज जो चल रही हो वो क्या हो? एडिशन और सब्ट्रैक्शन शो कर रही हो, बट ऑन डिफरेंट लेवल्स. For example, there is a series and there is another series that actually shows now we have a series with us 22, 24 and 26. This series is showing the addition of 2. And then we have another series 36, 40 and 44. This series is showing us the addition of 4. Now both are using the same method, the same function, but with a variance. And I am giving you the options like it must be 28 beta 48 Charlie 30
and delta 52. Now the only thing you can get confused is about what series to follow next. बस ये देखना होता है आपने, अदरवाइज इनमें कोई कंफ्यूज होने वाली ऐसा कोई चीज़ नहीं है. एक ही चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है एंड दैट इज कि पता नहीं अब 22 वाली सीरीज नेक्स्ट आएगी या 36 वाली. तो वो बड़ा इजी है, कन्वीनियंट है. आपने थोड़ा सा ना जरा एक लंबा सांस लेके सोच लेना है मार्क करने से पहले कि क्या हम मार्क करने जा रहे हैं. ये आ गया ना, और सेकंड पे ये है 36, 40, अब 44 इसका तो लग गया, तो इट मीन्स कि नेक्स्ट सीरीज किसकी फॉलो होनी है, दैट मस्ट बी ऑफ 26. और 26 की सीरीज हम +2 में कर रहे हैं, +4 में नहीं कर रहे. तो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा, दैट इज 28. The same can be considered for subtraction. I'm giving you another example. 96, 90, 84, and on the other hand, we are having 80, 70, 60, and then I have the option for you. 78, beta, 50, Charlie, 74, and delta 40. Now in both the series we are actually using the subtraction. 96 minus 6, 90, and 90 minus 6, 84. Same is the case here, but on a different level. 80 minus 10 is 70 and 70 minus 10 is 60. So अब हमने सिर्फ ये देखना है कि 96 वाली सीरीज आगे आएगी या 80 वाली. तो 80 वाली सीरीज का तो ऑलरेडी हमने नंबर यूज कर लिया. So we should go for the series starting with 96, 96, 90, 84, and if we subtract 6 from 84, we should get 78. So our right option should be option alpha, that is 78. Now this was the example where both the series were showing addition or subtraction, but it can not be the case every time. ये भी हो सकता है कि एक सीरीज जो है वो आपको क्या करे, सब्ट्रैक्शन शो करे, और एक सीरीज क्या करे, एडिशन शो करे. सो ये भी पॉसिबिलिटी है जो हमने सेकेंड पॉसिबिलिटी अपनी डिस्कस की थी. सो कैसे करेगी ये देखते हैं. इफ आई एम राइटिंग अ सीरीज लाइक 80, 88, 96, and then on the other hand I may use the series 66, 54, and 42. Now here it is evident that in this first series, that is your first series, here we are actually adding plus 8. 80 plus 8 क्या हुआ, 88, और 88 plus 8 क्या हुआ, 96. While in this second series, that actually shows minus 12. 66 minus 12, 54, and 54 minus 12, 42. So अब हमारे पास ब्लैंक है, हम ऑप्शंस देखते हैं नीचे कि क्या बनती हैं. Charlie is now you just have to decide what series will come next, 80 और 66 कौन सी आएगी.
अब देखें, अगेन इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, 80, 88, 96, and you have that 66, 54, 42. So this series is already there. इसका नंबर तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है. So you'll have to follow the first series. तो 96 प्लस हमें क्या करना है, हम क्या जा रहे थे, प्लस 8. तो 96 प्लस 8 करेंगे तो that will be 104, and our right option will be option बीटा. So इस तरह से आपने इसको देख लेना है. बड़े ही सुकून तसल्ली से करने वाला काम है. लॉजिकल रीजनिंग के बारे में एक चीज़ आप बहुत ध्यान से नोट कर लें, हैपहैज़र्डली करेंगे गड़बड़ करेंगे, गलती करेंगे. In my personal experience, because this logical or analytical reasoning has been the part of ECAT or engineering courses for so many years, and I have taught it a lot. In my personal experience, the students generally they know the correct answer, but they are often confused about it, and that is where they make error. So तसल्ली से करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है. Now we come to the third one. This one gets sometime very tricky because एक सीरीज क्या आ रही होती है, कंटिन्यूसली कांस्टेंट आ रही होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही होती. जब वो कांस्टेंट आ रही होती है तो आपको लगता है कि ये सब कुछ तो बिल्कुल ये कैसे बीच में आ गया, ये कहाँ फिट इन हो रहा है. सो जब वो आपको समझ नहीं आती कि ये कहाँ फिट इन हो रहा है तो यू टेंड टू मेक द एरर. हाउ? लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं आपको एक सीरीज देता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 8, 18, and then there is a blank. Now the option is, option alpha you have 20, beta you have 22, Charlie you have 16, and delta you have 24. अब यहाँ तक तो आपको बड़ा सिंपल लग रहा होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. क्लियरली लग रहा है कि इट इज़ एक्चुअली द मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है, या इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2. तो ये तो आपको बड़ा ठीक लग रहा होता है. बट एज सोन as you go from 14 to 18, it gets a little confusing कि ये क्या बात होगी, अचानक 14 के बाद straight away 18 कैसे आ गया. 18 इसलिए आया कि यहाँ पर जो 8 है that is actually not following the series, that is a constant thing. After every 3 digits there is one constant series. ये देखें, 3 के बाद यहाँ भी क्या आया. So what you are doing that you are actually taking 3 even numbers, then you are skipping the next one and replacing it with a constant series. जैसे 2, 4, 6, उसके बाद आपने 8 इवन नंबर का चूज नहीं किया, आपने एक्चुअली 8 चूज किया एक कांस्टेंट सीरीज का. और वो आपको कहाँ से पता चला, वो इस वाले 8 से पता चला. और फिर उसके बाद आपने क्या किया, 6 के बाद जो इवन नंबर था दैट यू स्किप्ड एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट वन. 3 के बाद आपने एक स्किप किया और उससे अगले नंबर पे चले गए. अब यहां भी यही हुआ, 3 के बाद आपने क्या किया, एक सबसे पहले तो कांस्टेंट सीरीज यूज कर ली दैट इज 8, एंड नाउ यू स्किप्ड 1 एंड वेंट ऑन टू 18. बट 18 के बाद फिर आपने 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लेने हैं, जैसे हमने यहाँ लिए 2, 4, 6, 10, 12, 14. तो अब 18 के बाद हमने कुछ स्किप नहीं करना, नेक्स्ट इवन नंबर लेना है दैट इज 20. So this is how you actually attempt number series. So now we move on to the next types of question regarding number series after addition and subtraction. ये बस ध्यान में रखिएगा, सिंगल सीरीज हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, बट if it is having 2 series, it can have even more than 2 series if the examiner wishes. But the question is कि अगर आपके पास मल्टीपल सीरीज है
तो आपने बड़े ध्यान से उनका एनालिसिस करने के बाद अल्टीमेटली फिर उनको सॉल्व करना है। नो नीड टू हरी, नो नीड टू पैनिक, तसल्ली से काम डाउन रह के इनको सॉल्व करना है। सो आइए चलते हैं, बाकी देखते हैं कि और क्या क्या टाइप्स नंबर सीरीज के हवाले से जनरेट हो सकती हैं। Students, now the fourth type is actually the fourth series can be created using multiplication. Now again, multiplication is not something that is very rare or that you do not use in real life. So it is very easy to locate the multiples. Examples देखते हैं कुछ. If I talk about 4, 8, 12, 16, and I give you the option like alpha is 20, beta is 24, Charlie 28, and delta is 32. You can easily guess that we are actually talking about the multiples of 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, and then 4 3s are 12 and 16, and then 4 5s are 20. So our right option will be option alpha. Now it looks very simple, but sometimes again we can use multiple series in multiplication as well, just like addition or subtraction. For example, if I say 12, 18, 24, and on the other hand, I say 20, 24, and then now sometimes you get confused कि ये क्या हो रहा है. यहाँ भी हम एक्चुअली मल्टीपल्स ही फॉलो कर रहे हैं. और कैसे कर रहे हैं? ऑप्शंस मैं भी आपको दे देता हूँ. 30, बीटा इज 36, Charlie 28, and delta 32. Now you may get confused about it. ये क्या हो रहा है? 24 दो जगह रिपीट हो गया. But there is nothing to worry about. Actually, we are dealing with two different multiples. The first series, it is actually the multiples of 6. 6 2s are 12, 6 3s are 18, and 6 4s are 24. While on the other hand, the second series we are having here, it is actually a series of multiples of 4. 4 5s are 20, 4 6 are 24, and then हमने ये वाली series यहाँ लानी है ना, तो 4 6 are 24, and the next option will be 4 7s are 28. So no need to worry, no need to panic. Again यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ सकती है कि एक सीरीज क्या हो, स्टैग्नेंट हो, जस्ट लाइक वी डिड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एग्जाम्पल उसके भी देख लें. लाइक आई से 5 10 15 15 20 25 30 15, and the options are 30, beta is 35, Charlie is 40, and delta is 45. Now you may get confused. यहाँ पर हम क्या ला रहे हैं? 2 के बाद हम repeat कर रहे हैं. But no, it is not the case. We are actually having two series. One is the series of multiples of 5, 5, 10, and 15. Then 20, 25, 30.
while this particular series is actually constant, ये change नहीं हो रही. So हम क्या करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and then the next one would be 35 and our right option will be option beta. Just like we are having one digit as a constant series, we may have two digits, ये भी हो सकते हैं, two numbers भी हो सकते हैं. For example, I have a question for you. 8, 16, 24, 24, 32, then 32, 40, 48, 24, 32, and the options are 52, 56, 62 and delta is 64. Now what actually we are doing, we are following two series. बिल्कुल उसी पैटर्न पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के. We are actually following two series. One series is the multiple of 8, 8, 16 and 24, and the other series is actually a series that comprises of two constant numbers, that is 24 and 32, and the rest remains the same. 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, and then 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 six are 48, and then we have the same series we had here, 24 and 32. It is another series. It has nothing to do with these multiples. ये constant series है और इसको हम change नहीं करेंगे. और उसी तरह अगली series क्या आएगी? That series actually consists of the multiples of 8. And considering that, our right option will be option beta, that is 56. Because 8 8s are 48 and 8 7s are 56. So nothing to worry about. Again, I'm emphasizing, rather I should say I'm emphasizing again and again that this is not difficult. This is only tricky. आपको सिर्फ एक लम्हे के लिए क्वेश्चन आने के बाद एक लम्हे के लिए ठंडे दिल से ना सोचना है कि क्या करना है, पैटर्न क्या फॉलो किया जा रहा है. लेकिन कोई मैथमेटिकल फंक्शन, कोई ऐसा कोई कम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है. कोई आपसे कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी जा रही. सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के चीज़ें हैं और उसी में ही आपके लिए कन्फ्यूजन जनरेट की जाएगी. द नेक्स्ट थिंग विल बी अबाउट division, or I should say division can also be used to create a series. Now how will it work? I say 1000, 500, 250, and I have the option 200, beta 1 to 5, Charlie 150, and delta is 100. Now you can see that this series, every number is divided by 2 and we get the answer of it, and that answer is further divided by 2. Like 1000 को आप divide करेंगे 2 से, तो it will give you 500. 500 को divide करेंगे 2 से, तो it will give you 250. और जब 250 को divide करेंगे 2 से, तो ये क्या करेगा? You will get 125. And your right option will be 125. So इस तरह से भी चीज़ें जो है वो through division भी आपसे पूछी जा सकती हैं. But
यहाँ फिर वही बात है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी of a single series or the question should consist of one single series. No, मल्टीपल सीरीज भी जनरेट की जा सकती हैं. कैसे? डिवीजन में भी जनरेट की जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल I say 400, then I say 200, then I say 50, 100, and then I put a blank. Now how will you define it if the options are 50, beta, 25, Charlie, 20, and delta is 30. Now what pattern are we following in this particular question is that a number is divided by 2. If we divide 400 by 2, we'll get 200. If we divide 200 by 2, we'll get 100. And this 50 is actually constant. अब हमें क्या करना है? दो नंबर को डिवाइड करने के बाद 2 से हमें ये 50 की सीरीज क्या करनी है? We have to repeat that series. So हम यही देखेंगे. इसके बाद 100 आ रहा है तो 100 का फर्दर क्योंकि दो नंबर्स के बाद 50 की सीरीज रिपीट होनी है ना, तो we have that one number that is 100, but again we'll have to divide that 100, and if we divide that 100 by 2, we'll get our option alpha as the correct option. So the sequence, the method is the same. The sequence may differ. Different चीज़ें, different patterns आपके लिए बनाए जा सकते हैं, but the core essence of the questions will stay the same. उसमें कोई मसला, कोई और नई चीज़ ऐसा नहीं आएगी. सिर्फ आपको सीक्वेंस ही पूछा जाएगा, नंबर सीक्वेंस ही पूछा जाएगा, और कोई चीज़ ऐसा जिसमें मुश्किल नहीं है. एक और क्वेश्चन देखते हैं जी. That is about स्क्वायर्स. अब स्क्वायर्स के रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जा सकते हैं. कैसे? हम अभी देखते हैं. एक तो स्क्वायर आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक कंसेक्यूटिव नंबर्स के आपको स्क्वायर्स आपसे एक सीरीज वो आपको डेवलप कर देगा. फॉर एग्जांपल 4, 9, 16, and then you get 25, and you have the options 30, beta 49, Charlie 36, and delta 64. Now you can easily guess कि क्या पैटर्न क्या फॉलो किया जा रहा है. That is actually the square of 4. This one is the square of 3. This figure is the square of 4, and this is the square of 5. So अब आपको next क्या करना है? You'll have to go for the square of 6, that is 36. So our right option will be option Charlie. So you can see that there is nothing very tricky about number series. स्क्वायर्स के हवाले से कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं. ये एग्जांपल्स के बाद मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स भी अभी करवाता हूँ. Now these questions regarding squares can also be asked in a different way, and that can be a bit tricky because all of a sudden while you are talking about squares and cubes, all of a sudden the numbers jump up. बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं. वो दूसरा तरीका क्या है? That is a method of getting a square, and then you will have the square of your answer as well. ठीक है कि एक तो आप स्क्वायर लेंगे इनिशियली, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे.
For example, if I say 4, (16), I should say 2, 4, 16, and then you have the blank. Option alpha is 64, beta is 512, Charlie is 128, and delta is 412. So what we are doing is कि जो फर्स्ट है इसका हम स्क्वायर ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर क्या ले रहे हैं, दैट इज 4, और 4 का स्क्वायर क्या है, 16, and now we have to take the square of 16, and if we talk about the square of 16, it is actually option beta 512. Now this is something tricky. Why? Because you cannot normally differentiate between such huge numbers ना, कि दो से अचानक जंप करके आप किस पे आ रहे हैं, 4, and then you talk about 16 and all of a sudden you have something like that 64 or 512, or even you can have bigger number than these numbers. So these squares can be tricky, so attempt them very carefully. Another way to ask questions regarding number series is using the concept of power. Now you have read the concept of power. What is power? That is, if I say 2 raised to power 4, it means 2 into 2 into 2 into 2. That is 2 2s are 4, 4 2s are 8, and 8 2s are 16. Same is the case with if I say 4 raised to power 4, it is 4 into 4 into 4 into, that is actually 256. So this is the concept of actually power. So ये कैसे work करता है देखते हैं. If I say 2, 4, 8, and then there is a blank. Now you'll get confused because यहाँ तो 2 का difference और यहाँ पर क्या है, 4 का difference है. Just to make it a bit more clearer, I should say 16. Now you'll get confused कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 का difference है, यहाँ पर 4 का difference है, और यहाँ पर क्या है, 8 का difference है. That is not about the difference regarding addition or subtraction. That is using the power of 2. 2 raised to power 1 is 2, 2 raised to power 2 is 4. अगर हम उसको 3 करेंगे, like I can solve it for you, 2 into 2 into 2, that is 8. और अगर हम उसको 4 करेंगे तो we have already witnessed that it is 16. और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, the next option अगर मुझे यहाँ पर दी जाए option alpha, that is 24, beta 32, Charlie 40, and delta 44. So what will be my right option? That is actually, this is 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, and here I should have actually 2 raised to power 5, and that is actually 32. So in this way you can also create a series of number. Okay? उसकी पावर के हिसाब से जो है वो आप उसको बनाते चले जाएंगे. और फिर कह रहा हूँ कि sometime it gets a bit tricky because the numbers jump up. 32 से आगे आप जाएंगे तो it will be like, यहाँ अगर इस गैप के बाद में आगे मैंने लिखा हो 64 और आगे लिखा हो 128, तो you'll get confused ना कि ये क्या बात है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है, फिर 16 का डिफरेंस है, फिर 32 का डिफरेंस है, देन 64 का डिफरेंस है. तो you'll get confused कि how this series is being managed. So that is something to do regarding the power of 2 or the power of any number. Another thing you can use
is cubes. Now cubes are even more tougher than the squares because यहाँ पर वो जो number jump कर रहे होंगे वो उससे भी ज़्यादा severe कर रहे होंगे. For example, if I say I give you a question regarding 2, 8, 5, 12 and I am giving you the options. Alpha is beta is Charlie is and delta is $290. So what we are actually doing, we are taking the cube of 2 and then the answer we are getting the cube of that answer as well. Like 2 का cube क्या है? 8 and then if we take the cube of 8 we get 512 and if we get the cube of 512 it will be 134 217 728. So this is how we manage the concept of cube. अच्छा cube को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि simultaneously जो numbers हैं उनका cube भी आपसे पूछा जा सकता है. For example, if I say 8 and then I say 27 and then I give you a blank. ठीक है, तो ये भी तो एक हो सकता है ना, क्यूब हो सकता है. अब नीचे ऑप्शंस क्या होंगे हमारे पास? 256, beta 512, Charlie 400 and delta 128. So how will you get it? This is simply the matter of cubes. 8 is the cube of 2, 27 is the cube of 3 and in the next place we need a cube of 4. So it means cube of 4 means 4 into 4 into. तो ये क्या बनेगा? Obviously that will be 256. So our right option in this regard will be option alpha. So these are some of the ways through which number series can be created and I do hope कि इतनी सारी examples के बाद आपको number series बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी.